Well, I have to pass. There is Python all. Okay, so already I am showing you the two example, but here the next example I am going to show you. The AS equals to then 0 colon false comma 1 colon equals to false. So here we passing here dictionary. Then if I pass here print all S, when I print all S, then it is showing you false. That's because by passing here false false. Same thing we pass here in all operator. One is true, two is true. Then it is showing you both are true. Then if I pass here in all operator, if one is true, then next we are passing here false colon 0, then it is showing you here false. Then when I pass here AS equals to empty iteratable, we pass print all S, then it is printing you true. Then when I pass here S equals to 0, then I'm passing here true, print all S, so it is showing you true because 0 is passed in the single quotation. Then now comes to the any. Any function is used to check if at least one element of the sequence fulfill the given condition. If any one condition is true, then it is return you the true value. That is a any. All means if all the condition are true, it is return you true value. And now I check right for any. Z equals to ସେ ଯୋଉ ଜିରୋଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ କହିଦେବେ ପଜ ହେଇଗଲା। जीरोटा कह जीरो जीरोटा आम सिंगल कोटेशन पास करूचे जेहेतु आम सिंगल कोटेशन पास करूचे दैट मीन्स इट इज ट्रू। हां से ट्रू हो। हाँ यस सर। तो आम खाली जदि जीरो पास करता खाली टिको तो फॉल्स। खाली जदि पास करता जीरो सेटा होची फॉल्स। एठी आम पास फॉल्स। जीरो 0.1 देन
0.01, then only 0. 0, 0, 0, 0, 0.01, 0.1, then only 0. If I pass here, print any z, then it is showing you here true. If I pass here z is equals to only 0, 0, 0, 0, 0, then if I print here, print any z, that is showing you false. So both are, in both the cases it is showing you false. Now I move. 0.1 ଟା ଟିକେ କହିପାରିବେ? ଏଠି ସବୁ ଯାକ 0 ହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ true ହେଲା, କୋଉଠି ନା 0.1, that means it is a value, and 0.01 it is a true value, so that it is showing you what, এটা true show କଲା। ଏଠି ସବୁ ଯାକ 0 ରହିଛି, ମାନେ any କହୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ସବୁ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆସିଯିବ then ସେଟା ପୁରାଟା ଫଲ୍ସ ହବ ନା? ପୁରାଟା ଫଲ୍ସ ହବ। ଆ ଭିତରେ ଦିଟା ଟ୍ରୁ ଅଛି, 0.01 ଅଛି, 0.1 ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରୁ ଆସିଲା। ସାର୍ କୁହ। ସାର୍ ମାନେ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି କି ଲାଇକ୍ ମାନେ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡା ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଫଲ୍ସ ରହିଯିବ ଦେନ୍ ସେଟା ତ ସେଟାକୁ ମାନେ ସେଟା ବି ଟ୍ରୁ ରେ ହିଁ କନସିଡର ହବ, ମାନେ ଫଲ୍ସ ହେଇଯିବନି ସେଟା? ଅଲ୍ ରେ ଫଲ୍ସ ଆସିବ, ଏନି ରେ ଟ୍ରୁ ଆସିବ। ସେମାନେ ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ ସାର୍। ଅଲ୍ ଆଉ ଏନି ମେଥଡ ପଢୁଛେ ନା, ଯଦି ଆମେ ଅଲ୍ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ସେଟା ଫଲ୍ସ ଆସିବ, ଏନି ରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଟ୍ରୁ ଆସିବ। Then next is the BIN, OCT, hexadecimal, and octal function. So basically, this function is used for converting a number to binary. It is converted to the number to the octal. It is converted to the number to hexadecimal. Okay, so it is a work of your but binary or hexadecimal number. Means converting a integer value to binary, converting integer value to octal, converting integer value to hexadecimal. So now
I write this binary, converting binary 23 to the binary number. It is 0B10, and when I convert this 23 to octal 23, then it is showing you 0, then small 0, 27. When I convert to the hexadecimal 23, it is converted to the 0x17. Then boolean, the boolean return false if the value is omitted to false, true if the value is true. Okay, the following value are considered false in Python. One is non, false, 0 of any numeric type like 0, 0.0, 0j, empty sequency. For example, what this one empty sequency. So it is showing you false. Empty mapping is false. Okay, when in a object orientation concept, while you are creating a class and object concept, if you are creating a object and it is not giving a reference to the any classes, at that cases it is also showing you the uh, false. Okay, so boolean value is always return you the two value, one is true, another is false. That is the basic work of boolean, right? These are the example we have to use for checking the boolean value. Now I run the file here. Empty iteratable is false. So now here we are passing a element. One element is present 0. Then it is showing you true. 0.0 is false. If you pass non is false. Then if I pass true, test true, then it is showing you true. EG string, we are passing a string, it is true. Okay. Means here we are passing a value so that it is true. So boolean is always return false when it is empty. When it is empty and when it is a zero element. When it is non, it is false. Okay. This is the work of boolean. सर 0.0 टा हैला false but 0 टा तो true हैला मैं जदि डबल भाई कोटेशन भितर पास करिवा ताले सेटा एलिमेंट हिसाब रे काउंट होबो जदि हमें डायरेक्टली पास करिवा तो दैट इज ए वैल्यू मैं स्ट्रिंग हिसाब रे पास कले सेटा ट्रू देखेइबो बुझियो yes sir then Python chr function it return a string one character whose ASCII code is an integer I. The chr method takes a single parameter, an integer I. The valid range of the integer is 0 through the 1, 114, 111. So it is showing you the ASCII value. Okay, as you know that when you type A, B, C, D from the keyboard, so it is having a standard numbers that is called the ASCII value. Now, if you want to know the ASCII value of any number, then you write the chr function. Chr function is giving you the ASCII value. If you write 97, 97 is having a value A,
when you pass 65, capital A ASCII value is 65. Then this symbol ASCII value is 1200. Okay, so every number is having some ASCII value print. Suppose I pass here CHR, then here I pass suppose 48, then I run the file. The 48 is having ASCII value 0. Then suppose I pass any hundred to ASCII value is F. Okay, so these are the value that is ସେ ମାନେ ସେ ସବୁ ନମ୍ବର ଏମିତି ଯୋଉ ASCII value ଗୁଡା ଏମିତି କିଛି ମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ୟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ସେଟା ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଆସିବ ଏମିତି? କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ଦେଖିବ। କିଛି ଖାଲି ଜାଣିବା କଥା ଯେ CHR function when you pass any number it is showing you the corresponding letter. Every letter is having a ASCII value. ତ ସେ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉପରଟା ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ଇଜି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟା ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ଟ୍ରୁ ହେଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟା ପାସ୍ ହେଲା, ଆମେ ବୁଲିଆନ ଟା କେତେବେଳେ ଫଲ୍ସ ଦେଖେଇବ ଯେତେବେଳେ ସେଟା 0 ହବ ନହେଲେ ବ୍ଲାଙ୍କ ହବ। ତ ଇଜି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇଜ ଏ ଭ୍ୟାଲୁ so that it is showing you true. then total value ଟା ମତେ ଏଟା ଶୋ କରିଦେଲା, ଇଜି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ is true. Then the complex method return a complex number where real and imaginary parts are provided, or it's converted to a string in the complex number. In a complex number, it contains the two part. One is real part. If the real is omitted, default value is 0. Another is imaginary part. If the imaginary is omitted, default value is 0. If the first parameter passed to this method is a string, it will be interpreted and complex number. In this case, second parameter should not be passed. So that means what happened? If you pass the complex number, if you want to pass the complex number, so like if you pass 2 minus 3, then it is converted to the 2 minus 3j. If you are not giving any kind of second parameter, then it is automatically converted to 0j. Then when you divide the complex number only, then it is 0j. And as it is a string, it is automatically converted to the 5 minus j. So string is converted to a complex number. So passing two minus 3j, then 1 plus 0j, then complex it is 0j, then 5 minus 9j. So these are the j କଣ ପାଇଁ ଆସିଯାଉଛି? complex number. ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ ସେଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଅପ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଲେଟର ରହିବ। ଏଠି j ଟା ଅଟୋମେଟିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାସ୍ କରୁଛେ ଏଟା i ଆଉ j ରେ ସେ କନଭର୍ଟ ହେଇଥାଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର। ତ ଏଠି ଆମର j ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ ଲାଇକ ସେଟା ଖାଲି j ହିଁ ଆସିବ ନା ଏମିତି 2i କି ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ କିଛି i वगैरह ଆସିବନି? ନାଇଁ ଏଠି j ଆସିବ ପାଇଥନ ରେ, ବୁଝିହଉଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ହିସାବରେ, ବୁଝିଲା? yes sir. The next function is Python division and mode. So division and mode method takes the two number and return the pair of numbers. The division and mode takes the two parameter. One is a non-complex number, another is a complex number. Like if you write 8, 3,
then it is divide the number and it is showing you quotient and remainder. 3 8, when you divide 3 by 8, then your quotient is 0, remainder is 3. When you write 8.03, then it is 2.0 and 2.0. The quotient is 2.0, remainder is 2.0. When you write 7.5 and 2.5, it is 3.0, remainder is 0.0. So in this way, it is converting the numbers. Like okay. So these are the number division. It is showing you quotient as well as it is showing you the remainder. Okay, that is the work of division and mode. Shivani, बुझी होजी? Yes, sir. Then enumerate function, enumerate method are the counter, add a counter to a iteratable. It returns it. The enumerate method takes two parameters. One is iteratable, a sequency or iterator or object that support the iteration. Means it provide you some kind of serial number or auto generate number. So that is called as the enumeration. Enumerate, it is randomly create one number. If you not passing any kind of number, then by default it is starts from 0. If you pass any kind of starting point, like here we're using one variable, we define enumerate grocery 10. So here we define a list and we're passing 10. So it is giving a serial number 10 to bread, 11 to milk, 12 to butter. Okay, clear? सर टिके आउथरे Enumerate, it is giving you some index number. If you are not passing any default number, माने आमे जेतबे एनुमरेशन यूज करिबा आमे जहा भी लिस्ट रे जहा वैल्यू आमे यूज करूचे तार गोटे से सीरियल नंबर प्रिंट करिवो. जदि आमे कोनोसी सीरियल नंबर न दउचे तो बाय डिफॉल्ट से स्टार्ट करिवो 0 रु. जदि आमे किछि सीरियल नंबर दवा जेंति कि आमे एठी 10 रु स्टार्ट कले तो से देखिरा 10 ब्रेड 11 मिल्क 12 भेला बटर. तो मैं एठी एग्जांपल ले शो करूची. सपोज एठी रहला ग्रोसरी ब्रेड मिल्क बटर. तो enumerate grocery. Okay, when I write enumerate grocery, it is giving 0 to bread, 1 to milk, 2 to butter. If I give here 10 to bread, 11 to milk, 12 to butter, so I have given here grocery which number is starting from 10. बुझियला? Yes, sir. अंकिता? ना सर हाँ. सर मते बुझी आसलानी आमे enumerate कौन करे गोटे ऑटो जनरेट नंबर क्रिएट करे. मु एठी गोटे लिस्ट पास कली ग्रोसरी ब्रेड मिल्क बटर. मु जेतेबेले कौन करिवि प्रिंट टाइप एनुमरेट ग्रोसरी जेतेबेले लिखिबि से एई जो लिस्ट पाई गोटे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट करिवो. गोटे हैला 0 हैला ब्रेड 1 हैला मिल्क 2 हैला बटर. कारण मु एठी कोनोसी डिफॉल्ट वैल्यू देई नहीं तेणु से प्रिंट लिस्ट एनुमरेट ग्रोसरी कले से ऑटोमेटिक ये जो लिखिली प्रिंट टाइप एनुमरेट ग्रोसरी आई से एटा देखेला माने ये जोटा मु यूज करची लिस्ट एनुमरेट ग्रोसरी ऑटोमेटिक मते देखेला 0 ब्रेड 1 मिल्क 2 बटर. मु एठी जेतेबेले एनुमरेट ग्रोसरी 10 स्टार्ट करूची तो से माने आमे स्टार्ट करिबा 10 11 एंड 12. बुझे होची ये गोटे सीरियल नंबर आमे देले जे से 10 रु स्टार्ट करिवो. एठी जदि आमे किछि सीरियल नंबर न दे कि स्टार्ट करिवा सेटा 0 रु स्टार्ट होबो. बुझियला?
यस सर मन जहाँ भी स्टार्ट हो दिस माने सीरियल वाइज ही जेमति कि माने जहाँ भी नंबर सब रहइबो हाँ एनुमरेशन रे सीरियल नंबर एटा जनरेट होइबो जावा रे हमें एटा यूज करथले रैंडम नंबर गोटे यूज करथले यस सर जो कन्वर्टिंग लिस्ट चेंजिंग एवडा सब कोनटा हेची एटा होची कमेंट एंट्री आमे जते बेले पाइथन रो कमेंट ता आमे पढिथिले कमेंट ता आमे हाश देकी कमेंट ता यूज करिबा इट इज नॉट नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम माने तुमे जानिबा पई एटा लिखा है जे एटा जते आमे हटै देबा किछि असुविधा नै एटा होची कमेंट एंट्री सर वो डिस्कनेक्ट हो जाइथिली हां एटा होची कमेंट एंट्री हेलो हां मुसे सर कहू किछि कोथि कि डिस्कनेक्ट तुम्हें पचारछ कमेंट टा ए जो हाश टा कोन हाश टा होची कमेंट्स सेटा रिमूव कले किछि असुविधा नै हाँ सर ठीक है सर जो से जो डिफ मोड टा आपण केतेबेला कहले मे बी मोदे लीव हे तो मु सेटा देखिनी बे देखिली कोटा डिफ मोड टा तो सेटा आउथरे कोइ परिबे कि डिनोट डिफ मोड जो ता माने ग्रोसरी जो ऊपर टा ग्रोसरी ऊपर कोटा को डिवीजन मोड पर तो सेटा से हाँ डिवीजन सर सेटा डिवीजन मोड तो सेटा केतेबेला करिथि मु से मोदे डिस्कनेक्ट की पॉज हेतली तो मोर देखिनी माने एबे मोर आसला एटा तो जे मु कहली एटा केतेबेला करिले तुम पचारली सेटा आउथरे टी कहि देबे एटा एटी देखि नथिले तुमको एटा किछि डिस्कन तमे थिलो एटा जो ए कहले ए स्लाइड टा तमे देखि नथिलो एटा तो ग्रोसरी टा सेटा तो देखची मु एबे जो स्लाइड टा देखो जी अंकित ये शिवानी तुमको देखा जाउछ एटा डिवीजन मोड स्लाइड टा नहीं सर एटा नहीं सर नेटवर्क प्रोब्लेम अछि बोधे तमरो अच्छा सर एबे मते डिफ मोड देखाला आ पूर्व जो देखैतले ना मते ग्रोसरी टा देखा जाउतला हाँ मु ए डिवीजन मोड स्लाइड टा जेताले पढेली तमे देखि नथिलो हेलो सर तंगरो डिस्कनेक्ट होछि बोधे हेलो अंकिता हाँ सर वॉइस आछि जे बट अपन स्क्रीन देखा जाउनी मु डिस्कनेक्ट हो जाउची बार-बार माने नेटवर्क इश्यू होची तो हाँ डिवीजन मोड माने हमें गोटे नंबर टा सर को मोनले मु टिके आउ गोटे मु स्टार्ट करबी ना वेट करबी तुम नेटवर्क चेंज करिवो सर टिके रहंतु मु अलगा टे कनेक्ट करची ठीक अछि हेलो हाँ अंकिता सर मो वॉइस आछि हाँ बस
डिवीजन मोड तो से जो डिवीजन मोड रो काम हला मु नंबर टा को डिवाइड करिवि तार क्वोशेंट और रिमाइंडर टा मते एठी शो करिवो बुझिले एठी क्वोशेंट टा शो करिवो हला 2 रिमाइंडर हला 2 सेमती एठी 3 रे 8 डिवाइड करिवि मोर क्वोशेंट हला 0 रिमाइंडर हला 3 बुझि पेलो यस सर the next enumerate function I will define see there grocery bread milk butter then here I am using a for loop it is one for loop for item in enumerate grocery so here I print 0 is bread 1 is milk 2 is butter then next is count item in enumerate grocery so it is another way we define so same thing we are display in the different way एठी जदि मु खाली लिखिबी for loop यूज करिवि item in enumerate grocery सेठी as a element हिसाब रे देखेला एठी जदि मु खाली लिखिबी for count one variable जदि लिखिबी count से counting करिवो item in enumerate grocery तो count ପାଇଁ से ऑटोमेटिक गोटे वैल्यू जनरेट कला 0 1 2 एठी सेमते काउंट ପାଇଁ मु एठी स्टार्ट कली 100 ओके तो काउंट रो गोटे डिफॉल्ट वैल्यू देली 100 जोटा कि आमे पास करूचे ता ପାଇଁ से जनरेट कला 100 101 102 एटा जोटा देखेला ब्रैकेट भितरे as we are not passing any kind of value माने मु डिफॉल्ट किछि वैल्यू निज तरफ रो देनी तेनु से डिफॉल्ट वैल्यू जनरेट कला 0 तो 0 1 2 करके देखेला एठी बुझियला सर और सेटा काउंट मेंशन करछन बोले सेटा 0 रू काउंट हला हाँ एठी काउंट नाही एठी काउंट जेहेतु दिया हला सेति ପାଇଁ से किछि वैल्यू देले नै 0 1 2 देले एठी काउंट ପାଇଁ हमें डिफॉल्ट जो गोटे वैल्यू पास कर देला 100 तो एटा स्टार्ट हला 100 101 102 बुझियला यस सर तो जो बैकस्लैश एन से सेटा कोथि पई अछि नेक्स्ट लाइन को जीवा जो ପାଇଁ प्रिंट आइटम प्रिंट एलएन जेंति जावा रे यूज करा जाउथला सी प्रोग्रामिंग रे सेंति प्रिंट स्लैश एन माने हमें कर्सर टा को नेक्स्ट लाइन को आनिया पे स्लैश एन हमें यूज बुझियला यस सर से जो से प्रिंट आइटम जगह सेटो माने ग्रोसरी टा अछि ना तो प्रिंट यदि हमें ग्रोसरी लिखि पत्ता हले होबन कोनटा कहलो से मु कहली जो फॉर आइटम न्यूमरेट ग्रोसरी जो लिखचंदी तो सेटा माने ग्रोसरी इक्वल्स टू सब आइटम्स गुडा को अछि ना ता यदि हमें प्रिंट ग्रोसरी ही डायरेक्ट कर दबा तो सेटा किछ अलगा आसीबो की ए नंबर जनरेट हबानी हमें एनुमरेट तले काहे की यूज करूचे एनुमरेट हमें यूज करूचे गोटे सीरियल नंबर जनरेट पई बुझे से तो तापे माने एमती फॉर आइटम एमती को लिखिया पड़िबो हां ता पे एमते लिखिया पड़ियो बुझेला हां से then comes to evaluation function evaluation method parse the expression passed to this method and run the python expression within a program so it is evaluate a number x is equal to 1 evaluation is equal to x plus 1 means in a expression we evaluate a number okay गोटे expression भितर ही हमें evaluation करिवा that is a work of evaluation
So x is equals to 1, evaluation x plus 1, 1 plus 1 it gives you 2. Okay. बुझेला शिवानी अंकिता evaluation work. हाँ सर The similar way execution method is used to execute the dynamically created program. So dynamically we are creating a program, means in a double quotation we are passing a expression, in that expression we are passing a coding like a is equals to 5, b is equals to 10, then it is adding a number and show the result. A is equals to 5, b is equals to 10, then sum is equals to a plus b. That is showing you 15 here. Okay, a is equals to 5 slash n means next line, b is equals to 10 slash n next line, then print sum is equals to a plus b. So at runtime it is added the two numbers, only we are using execution keyword exe exec then program, that is added the two number and shows the result as 15. ସେଟା ମୋତେ 15 କରି ଦେଖେଇଲା ବୁଝିଗଲା। अंकिता शिवानी बुझिपाइल एटा? Yes, sir. ନାଇଁ ସାର୍ एटा एग्जीक्यूशन करियो माने गोटे स्टेटमेंट भितरे आमे प्रोग्रामटा पास करिवा। एटी गोटे स्टेटमेंट रहिला माने जो सिंगल कोटेशन ने माने आमे गोटे वैल्यू पास करूचे, वेरिएबल वैल्यू स्टोर करूचे, जेंति a इज इक्वल्स टू गोटे स्ट्रिंग वैल्यू पास करबा को हेले आमे पास कर दोचे, किंतु एठी आमे जेतेबेले आज ए स्टेटमेंट गोटे वेरिएबल ले जदि स्टेटमेंटटा पास करिवा ताको आज ए प्रोग्राम भली आमे एग्जीक्यूट करि परिबा। सेति पे एठी आमे a रे पास कले 5, b रे पास कले 10, then print sum is equal to a plus b. तो एठी हमें एग्जीक्यूशन मेथड लिखिले तले गोटे स्ट्रिंग वेरिएबल रे हमें प्रोग्रामिंग भी लिखि पारुचे। हमें नॉर्मली जतले स्ट्रिंग पास करिवा हमें कोन पास करछे, सपोज a is equal to